जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे प्रेसिडेंट जो टर्मिनेटेड किए हैं सर्विस ऑफ एन इंडियन आर्मी मेजर को। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डिसमिस्ड द इंडियन आर्मी मेजर जो है, जो सेटन होते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी में यूनिट ड्यू टू द देयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीरियस नेशनल सिक्योरिटी ब्रांचेस में as the determined by an army inquiry। देखिए प्रेसिडेंट यूटिलाइज करते हैं देयर अथॉरिटी अंडर द आर्मी एक्ट 1950 को, along with the article number 310 of the constitution and other relevant powers to the promptly of terminated his services। ठीक है फ्रेंड्स, what are the ethical concerns of involvement in the army measures action and subsequent dismissal? क्या क्या है देखिए फ्रेंड्स। ethical violation of national security concern क्या हो सकता है? an army inquiry initiated in March 2022, तो मार्च में चला था ये इंक्वायरी। अब क्या रिवेल्ड क्या हुआ था? lapses and ethical violation by the measure including the sharing of classical information, सस्पिशियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें, एंड कनेक्टिंग विद द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स बाय द सोशल मीडिया। देखिए मेजर प्रिपरेशंस ऑफ द सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वाज आल्सो अगेंस्ट द आर्मी रेगुलेशन के इसमें जिसमें आप कर नहीं सकते इसमें। देखिए दिस एक्शन राइट्स सिग्निफिकेंट एथिकल कंसर्न एंड प्रपोज इट थ्रेटेंड टू नेशनल सिक्योरिटी। देखिए प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी एंड लीगल बेसिस क्या है? The President, in accordance with the powers and conferred by the Section 18 of the Army Act 1950 and other relevant enabling of powers issued by the order to terminate the services of the major immediately। देखिए this action of domesticate क्या करेगा? ये exercise of the executive authority within the framework of established of legal provision। It's underscore the commitment to the uphold the ethical standards and maintain करेगा integrity of the military को। देखिए बॉर्डर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है इसमें? द टर्मिनेशन ऑर्डर द हाइलाइट्स द इंपोर्टेंस ऑफ द एथिकल कंडक्ट, इंटीग्रिटी एंड द नेशनल सिक्योरिटी इन द आर्म फोर्सेस। देखिए फ्रेंड्स, इट इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द आर्मी हैज बीन टेकन अप डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन अगेंस्ट एट ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल फॉर द सोशल मीडिया पॉलिसी वायलेशन रिलेटेड टू देयर मेंबरशिप इन देयर ग्रुप व्हिच डिराइव इंपोर्टेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए आप इसमें सोशल मीडिया में आप ज्यादा एंगेज भी नहीं हो सकते इसमें। देखिए दिस केसेस एम्फसाइज करेगा आर्मी विजिलेंस एंड द प्रोएक्टिवनेस इन द एड्रेसिंग द पोटेंशियल ब्रीचेस ऑफ द सिक्योरिटी एंड लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी। देखिए ऑनगोइंग द एफर्ट ऑफ सेफगार्डिंग द क्लासेस क्लासिफाइड द मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड द काउंटर इंटेलिजेंस कंसर्न रिमेन ए क्रिटिकल फोकस फॉर द मिलिट्री एंड नॉट द लीस्ट ऑफ व्हिच इज द सेटिंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स एंड द एडहेरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, मोरल स्टैंडर्ड को आपको वहां पे भी आपको मेंटेन करना है। देखिए व्हाट आर आर्टिकल नंबर 309 एंड 310 के 11 क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? रिवील द सिविल सर्विसेज। ठीक है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड ट्रेड। आर्टिकल नंबर 309 क्या बोलता है? देखिए empower the parliament and the state legislature to regulate and requirement and the condition of the services of a person appointed to the public services and the post in connection with the affairs of the union and any state respectively। देखिए बस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 310 क्या बोलता है? ये एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन provided by the constitution and the civil servant of the union workers at the pleasure of the president and the civil servant under the state works at the pleasure of the governor of the state, जो कि है इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। आर्टिकल नंबर 311 क्या बोलता है? आर्टिकल 311 सब क्या बोलता है? से दैट नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आइदर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज है अगर और जो स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डिसमिस और रिमूव बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, जो इसके नीचे का अगर रहेगा अथॉरिटी तो उसको वो रिमूव नहीं कर सकते हो टू ओन देयर अपॉइंटमेंट हिमसेल्फ। जैसे कि जो उसको अपॉइंट किया वो इसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस के प्रेसिडेंट आप अपॉइंट करते हैं तो वो ही रिमूव कर सकते हैं, उनके जो लोअर अथॉरिटी रहेगा वो नहीं कर सकता। देखिए आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? से दैट नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस और रिमूव द रिड्यूस इन द रैंक ऑफ एक्सपर्ट। देखिए आप इंक्वायरी इसी हैज बी इन्फॉर्म टू द चार्ज, उसको बताना पड़ेगा किस लिए आपको उसको रिमूव कर रहे हैं, गिवन आप रीजनेबल कंपनसेशन देंगे उनको एंड बीइंग अप हेडेड इट इज रेफरेड टू द दोस चार्जेस।